गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी टू इंडिया। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, वो अभी 2 डे ऑफिशियल विजिट पर इंडिया पर थे। तो ये पहली विजिट है इंडिया पर की उनकी एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। तो अगर हम इंडिया और यूएई का बायलैटरल रिलेशनशिप देखें, इंडिया और यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1972 में एस्टैब्लिश हुए थे। जनवरी 2017 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया। फेब 2019 में यूए ने इनवाइट किया इंडिया को एज गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो प्लानरी थी उसके लिए। और पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद भी उन्होंने दिया था 2019 में। ठीक है। यूएई जो है गेस्ट कंट्री भी था फ्रॉम इंडिया एट G20 समिट लास्ट ईयर। तो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो $85 बिलियन का पहुंच चुका है 2022-23 में। और यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना और यूएस। ठीक है। अब यूएई जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है इंडिया के लिए। इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2022 में। और ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसका जो कि एक बेसिस बनने वाला है फ्यूचर में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो है साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसके लिए। तो यूएई जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी बन चुका है इंडिया में। यूएई ने कमिट किया है कि वो $75 बिलियन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जुलाई 2023 में पीएम मोदी ने जब विजिट किया अबू धाबी में, तो दोनों कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। जुलाई 2023 में यूएई और इंडिया ने एग्री किया कि इंडिया का जो यूपीआई है उसे जो है यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया जाए। 2023 में ही आईआईटी दिल्ली को अलाउ किया गया कि वो अपना कैंपस ओपन करे अबू धाबी में। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले कि अबू धाबी में वो कैंपस ओपन किया है, और वो के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने खुद ही इसको आकर इनाग्रेट किया। एनआरआई की रेमिटेंसेज अगर हम देखें तो एनुअल रेमिटेंसेज जो कि लार्ज इंडियन कम्युनिटी देती है यूएई से, वो हमारे लिए 18% हमारी टोटल रेमिटेंसेज के बराबर है। 2017 में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के साथ एक एमओयू साइन करके स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल रिजर्व जो है मैंगलोर में एस्टैब्लिश करने के लिए जो है वो एग्री किया। और अपने जो खुद के भी उनके क्रूड ऑयल हैं वो भी इस अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो पादूर में है कर्नाटका में, वहाँ पर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। ठीक है। इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी जो है वो 3.5 मिलियन की है, जो कि लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है यूएई में। और एमओयू साइन किया गया है। अभी रीसेंट जो विजिट है इसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए हैं वो देखते हैं। तो न्यूक्लियर कॉपरेशन पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वह एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें कि हम 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अबू धाबी में, उसके लिए न्यूक्लियर गुड्स और सर्विसेज इंडिया से देंगे। और लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई भी जो है वो एडनॉक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में जो है वो साइन हुई है, जिसमें कि 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है वो एलएनजी सप्लाई जो है वो इंडिया को मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ few years और over a period of 1 year एक्चुअली। तो एडनॉक और इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे क्रूड स्टोरेज के इंडिया में। एग्रीमेंट साइन हुआ है अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए ऊर्जा भारत, जो कि एक जॉइंट कंसोर्टियम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रो के बीच में, और एडनॉक के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि ऊर्जा भारत जो है इंडिया में क्रूड ऑयल ला सकेगा और कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेगा। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी के बीच में भी फूड पार्क डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो एमओयू साइन हुआ है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमडी जो है वो प्लान कर रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट्स जो थे, जिनको जो कि फार्मर्स को हेल्प करने के लिए पहले बनाए गए थे और उन्हें बाद में बंद कर दिया गया था, वो रिवाइव होने वाले हैं अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम। तो ये आईएमडी ने 199 ये डैमूज बनाए थे 2018 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर, और वेदर डेटा जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता था ताकि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर एडवाइजरीज जो है फार्मर्स को दी जा सके ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो जो ये ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम है, ये आईएमडी का इनिशिएटिव है, जो कि वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरीज देगा फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वेदर बेस्ड जो है वो कर सकें। आईएमडी जनरेट करेगा मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट्स, टिपिकली 5 से 7 डेज़ का जो है फॉरकास्ट होगा, जिसमें कि पैरामीटर्स जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन उन्हें बताई जाएगी। फार्मर्स को
अपनी क्रॉप और लाइफ स्टॉक को मैनेज करने में हेल्प होगा। फार्मर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल चैनल, चाहे वो एसएमएस हो, मोबाइल ऐप हो, रेडियो, टेलीविज़न, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा जो है वो डिसैमिनेट की जाएगी। जो ये डैमूज़ होंगे ये डिसेंट्रलाइज करेंगी वेदर डेटा एनालिसिस को और एडवाइजरी डिसैमिनेशन को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट्स हैं ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन था आईएमडी और आईसीएआर के बीच में, फार्म प्लानर्स और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। तो ये ब्लॉक लेवल एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी बुलेटिन जो है ये दी जाती थी इसमें। तो 80% जो इंडियन फार्मर्स हैं वो आपको पता है स्मॉल और मार्जिनल हैं, तो इसलिए वो रेन फेड एग्रीकल्चर पर रिलाई करते हैं। जो डैमूज़ जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में लोकेटेड थे, ये वेदर डेटा का इस्तेमाल करते हैं आईएमडी के थ्रू, और एग्रीकल्चर एडवाइजरीज जो हैं वो फार्मर्स को इशू करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर या फिर इन पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि फार्मर्स अपना फ्यूचर जो है वो फार्मिंग का बेटर प्लान कर सकें और रिस्क को मिटिगेट कर सकें। तो हुआ क्या था कि नीति आयोग ने कुछ एडवर्स रिपोर्ट्स दी थी डिस्ट्रिक्ट में एग्रोमेट्रोलॉजी यूनिट्स के अगेंस्ट, तो ऑफकोर्स इसलिए इसको बंद कर दिया गया था, बट अब प्लान किया जा रहा है कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर डिमांड जो है वो बढ़ रही है और आने वाले डेकेड में और ज़्यादा बढ़ेगी अक्रॉस ऑल जोग्राफीज़। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ओर जो है इंडिया में, लेकिन वो कम हो रही है, तो इसलिए जो है इंडिया को अब इसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और 2019 के मुकाबले अगर हम 2024 में देखें तो लगभग इंपोर्ट्स डबल होकर 26,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कॉपर है क्या, एक सॉफ्ट मेलिएबल डक्टाइल मेटल है, बहुत हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी। वन ऑफ द फ्यू मेटल्स है जो कि नेचर में जो है अकर होता है और डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में होता है। ये इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस बेस मेटल है जिसकी वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, चाहे वो डिफेंस में हो, स्पेस में हो, रेलवेज, पावर केबल, मिंट, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, हर जगह इसका यूज़ होता है। इंडिया के पास 2% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ कॉपर है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, उसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश में है। खेतरी माइन आपको पता ही है, सबसे फेमस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइंस है इंडिया की। तो इंडिया में जो कॉपर की प्रोडक्शन होती है वो सेल्फ सफिशेंसी के लिए जो है वो काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है कॉपर ओर को। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हम जनरली अपनी मीट करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप के थ्रू, इम्पोर्ट करके, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक, तो कॉपर कंसनट्रेट जो है उसको स्मेल्ट किया जाता है कॉपर एनोड में, कॉपर वैल्यू चेन अगर हम देखें तो इंडिया में जो ये काम करता है वो करता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, ओनली इंटीग्रेटेड कंपनी है कंट्री में जो कि माइनिंग और बेनिफिशिएशन ऑफ ओर में इन्वॉल्व है। हिंडाल्को भी है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड, ये मेजर कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, और इनकी अपनी खुद की भी कॉपर माइंस हैं अदर कंट्रीज़ में। ओके, तो अगर हम करंट स्टेटस देखें कॉपर ओर प्रोडक्शन का इंडिया में, तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करता है, वो मिनरल ब्लॉक एक्सप्लोरेशन इंडिया में देखता है, और इनसफिशेंट एक्सप्लोरेशन की वजह से, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की वजह से पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट ऑफ न्यू माइंस जो है वो नहीं हो पा रही हैं। 2023 में इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मॉडिफाई किए रूल्स, ताकि प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज जो है उनको एनकरेज किया जा सके कि वो क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कॉपर को एक्सप्लोर करें। कॉपर को डेजिग्नेट किया गया है एज ए क्रिटिकल मिनरल ऑल्सो, क्योंकि इसका रोल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में भी है। तो इंडिया जो है वो इसकी जो है वो इंपोर्ट भी कर रहा है, तो इसलिए इसको स्पॉटलाइट में रखा गया है। तो चाहे न्यू इंपोर्ट सोर्सेज देखने हो कॉपर रिच कंट्रीज़ में जैसे मंगोलिया, या फिर इक्विटी बाय करनी हो जाम्बियन या फिर चिलियन माइंस में, मेजर प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ कॉपरेट करके या कोलैबोरेट करके इंडिया की कॉपर सप्लाई चेन को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पहाड़ी कोरवा ट्राइब। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज मैनी एज 54 सेटलमेंट्स जो है पहाड़ी कोरवा कम्युनिटी के, उनको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू रोड्स इन नॉर्थ छत्तीसगढ़ अंडर पीएम जनमान स्कीम। तो पहाड़ी कोरवा ट्राइब एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ का, छोटा नागपुर एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया में कोई बिलोंग करते हैं, और ये कोरबा और जाजपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को में जो है जनरली पाए जाते हैं। इनकी मदर टंग जो है वो कोरवा लैंग्वेज है, और ये मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है लैंग्वेज। और लार्जली जो ये कोरवा है ये स्मॉल स्केल फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, फॉराजिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम झूंगा खेती कहते हैं। तो कोरवा ट्राइब जो है इनकी अपनी खुद की पंचायत होती है। इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो एंसेस्ट्रल वर्शिप पर सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस्ड है, और ये कुछ हैंडफुल ऑफ गॉड्स और डीटीज़ को भी जो है वो वर्शिप करते हैं। अब पीएम जनमान स्कीम क्या है?
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो पीवीटीजीज़ का है उसको इम्प्रूव करने के लिए, खासकर हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड्स में, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पीवीटीजी कम्युनिटीज़ के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए स्कीम लाई गई है, जिसमें 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस जो है वो की जा रही हैं पीवीटीजीज़ के लिए। तो जैसे चाहे वो परमानेंट हाउसिंग देना हो, रोड कनेक्टिविटी देना हो, पाइप वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, आंगनबाड़ी फैसिलिटीज़ या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सब पीएम जनमान स्कीम के थ्रू जो है वो देने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेस बायोपिया। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, फार्मा कंपनी एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने अनाउंस किया है कि डीसीजीआई ने उनके एक न्यूड आई ड्रॉप प्रेस वू उसको अप्रूवल दे दिया है, जो कि डेवलप किया गया है ताकि डिपेंडेंसी ऑन रीडिंग ग्लासेस जो कि इंडिविजुअल्स प्रेस बायोपिया से अफेक्टेड है उसको कम किया जा सके। तो प्रेस बायोपिया क्या है? एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है जिसमें आइज़ अपना जो है एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो खोने लगती है। तो जनरली होता क्या है कि 40 साल की एज के बाद आप देखोगे कि लोगों को स्पेक्टिकल्स इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि उनकी आइज़ की जो मसल्स हैं वो जो है वो लूज़ होने लगती हैं। तो ये प्रेस वो कैसे काम करता है? इसमें जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, खासकर पिलोकार्पिन, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है आयरिस मसल्स को, और एक बेस सॉल्यूशन इसमें दिया गया है जो कि आपके टीयर्स के पीएच लेवल को अडेप्ट कर लेता है, और फिर ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है साइज़ ऑफ द प्यूपिल को, और ह्यूमंस को फिर अलाउ करता है कि वो थिंग्स को क्लियरली सी कर सकें। ठीक है, तो ये आई ड्रॉप्स जो हैं उनको सेफ्टी में ध्यान में रखे गया है क्योंकि ये लंबे टाइम तक यूज़ करने होंगे। अगर कोई पर्सन जो है वो फिर 40 के बाद इसको यूज़ करना शुरू करता है तो ऑफकोर्स वो इसको 20-30 ईयर्स तो मिनिमम यूज़ करेगा। ठीक है, जब तक उसकी ओल्ड एज तक वो यूज़ करेगा। तो इसको लेकिन वो एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन बनाया गया है। तो अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जा रहा है तो कंपनी ने बोला है कि थोड़ी इचिंग और रेडनेस हो सकती है आई में, आईब्रो में पेन हो सकती है क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये आइज़ की, तो मसल स्पाज्म्स भी हो सकते हैं आइज़ में, तो इसलिए इसको प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन ही रखा गया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is visit of Crown Prince of Abu Dhabi to India. This topic is important for your international relations. So Crown Prince of Abu Dhabi had recently paid a 2-day official visit to India, and this was his first visit to India as Crown Prince of Abu Dhabi. So if we want to look at the bilateral relationship between India and UAE, then India and UAE established diplomatic relations in 1972, and in January 2017, both sides signed a comprehensive strategic partnership agreement. In February 2019, UAE invited India as the guest of honor to address the inaugural plenary of Organization of Islamic Cooperation grouping. And PM Modi also paid his third visit to UAE in August 2019, and he was awarded the highest civilian award of UAE called the Order of Zayed. Okay, so UAE was also the guest country at G20 summit, which was held under India's presidency last year. And India and UAE trade has reached $85 billion in 2022-2023 period, making the UAE as India's third largest trading partner for the period after China and US. And UAE is also the second largest export destination of India after US. And India and UAE recently in 2022 signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement, and this agreement will serve as the basis for the FTA that we are going to sign with Gulf Cooperation Council countries in the future also. Okay, so after the signing of SEPA, UAE has emerged as the fourth largest investor in India, and UAE has committed to invest almost $75 billion in India's infrastructure sector. So in July 2023, during the visit of PM Modi to Abu Dhabi, both countries agreed to start trade settlement in local currencies, and as recently as last year, both sides agreed to link India's UPI with UAE's instant payment platform. And in 2023 itself, India had signed an MOU with Abu Dhabi for setting up IIT Delhi campus there. And recently, I think last week, you saw that IIT Delhi campus was opened in Abu Dhabi. And if we look at NRI remittances, then annual remittances made by the large Indian community in UAE is about 18% of the total remittances that we receive in India. So in 2017, Abu Dhabi National Oil Company and the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited also signed an MOU to establish a strategic crude oil reserve in the city of Mangalore, that is in Karnataka. And ADNOC also is involved in exploring the possibility of storing its own crude oil at ISPRL's
underground oil storage facility in Padur in Karnataka. So Indian expatriate community approximately stands at 3.5 million, and it is the largest ethnic community in UAE. Okay, so what are the key highlights of the visit of the Crown Prince of Abu Dhabi to India, recent one? So MOU was signed on nuclear cooperation, where India will be supplying the nuclear goods and services to Baraka nuclear power plant in Abu Dhabi. A long-term LNG supply contract has also been signed, whereby we will be receiving a supply of 1 million metric ton per annum of LNG from Abu Dhabi. Both sides also signed the MOU for exploring the additional opportunities for crude storage in India. Both sides signed for production concession agreement so that Urja Bharat, which is a joint consortium of IOCL and Bharat Petro Resources Limited, to bring crude oil to India and contribute to India's energy security. Both Government of Gujarat and Abu Dhabi Developmental Holding Company also signed an MOU on food parks development in India. Okay. So the next topic is Grameen Krishi Mausam Seva. This topic is important for your governance section. So according to media reports, the Indian Meteorological Department is planning to revive the district agro-meteorology units under the Grameen Krishi Mausam Seva scheme. IMD initially established 199 DAMUs in 2019 in collaboration with the ICAR, and these units were serving the farmers by utilizing better data for generating and distributing sub-district level agriculture advisories so that farmers can make informed decisions. So what will be this Grameen Krishi Mausam Seva scheme? So this scheme will be an initiative of the IMD aimed to provide weather-based agriculture advisories to farmers, and the primary aim will be to enhance farmers' decision making related to agricultural activities. So IMD will generate medium-ranged weather forecasts for different agriculture regions at district and sub-district levels, and these forecasts would typically cover about 5 to 7 days, and it would include parameters like rainfall, temperature, humidity, wind speed, and wind direction. So this would help farmers to manage their crops and livestock, and these advisory will be shared with farmers through multiple channels like SMS, WhatsApp, mobile apps, radio, television, and even through local government bodies. So these DAMUs were set up to decentralize weather data analysis and advisory dissemination to the sub-district level. So what is this District Agro-Meteorology Units, or DAMUs? DAMU project was a collaboration between IMD and ICAR, and the initiative was meant to support farm planners and farmers by giving block-level agro-meteorological advisory bulletins. So we all know that about 80% of Indian farmers are small and marginal. They rely heavily on rain-fed agriculture. So DAMUs, which are located within Krishi Vigyan Kendras, play a key role by using weather data from the IMD to prepare agricultural advisories. And this data is sent through text messages, WhatsApp, newspapers, in-person communication advisories, which help the farmers to plan better and mitigate their risks. So a Niti Aayog report misrepresented the role of these DAMUs and advocated for its privatization, and that's why the government discontinued this scheme earlier, but now it is being planned that they will be revived soon. So the next topic is copper production in India. This topic is important for your economy section. So though copper demand is poised to surge over the next 1 decade across all geographies, production of copper ore in India fell to 3.78 million tons in the last few years, and as a result, India is being forced to import copper, and this import has doubled in this financial year as compared to the financial year 2019. So what is copper? It's a soft, malleable and ductile metal with very high thermal and electrical conductivity, and it is one of the few metals that occur in nature in directly usable metallic form. It is an important non-ferrous base metal having wide industrial applications, and it ranges from defense, space program, railways, power cables, mint, telecommunication cables, etc. And India has about 2% of the world reserve of copper. So we all know that Rajasthan is the state which has the highest reserves of copper, especially the Khetri mine, which is one of the largest copper mines in India, and it is being followed by Jharkhand and Madhya Pradesh. So India's copper production is about 2% of the world's copper production, and it is not self-sufficient in the production of copper ore. So this domestic demand for copper and its alloys are met through
is met through domestic production, then we certainly recycle some of the copper scrap, and we also import now. So in the copper value chain, copper concentrate is melted into copper anode, and which is the public sector unit which is responsible for this copper mining and beneficiation of ore. It is Hindustan Copper Limited. We also have Hindalco Industries and Vedanta Limited, which are the major copper producers in the private sector, and they also own certain copper mines in other countries. Okay, so what is the current status of copper ore production in India? So the National Mineral Exploration Trust, which is under the Ministry of Mines, is overseeing the mineral block exploration in India, and insufficient exploration and a lack of private sector participation over the last 1 decade has hindered the development of new mines. So in 2023, Ministry of Mines modified certain rules to encourage private exploration agencies to explore critical minerals like copper, and copper has been deliberately designated as a critical mineral because of its role in clean energy technologies, and this has put India's growing import reliance into the spotlight again. So, if from developing new import sources in copper rich countries like Mongolia to buying equity in Zambian and Chilean mines, major private players are collaborating with Ministry of Mines to secure India's copper supply chain. Okay. So the next topic is Pahadi Korwa tribe. This topic is important for your social issues. So as many as 54 settlements of the Pahadi Korwa community will be connected through roads in North Chhattisgarh under the PM Janman scheme. And what is Pahadi Korwa tribe? It is a particularly vulnerable tribal group of Chhattisgarh, and it belongs to the Chota Nagpur area of central India. It is primarily found in Korba and Jashpur districts of Chhattisgarh. Their mother tongue is Korwa language, which belongs to the Munda branch of Austroasiatic language family. So the Korwa tribe largely depends on small-scale farming, fishing, hunting, and foraging forest produce. They practice a form of subsistence agriculture which is called Jhunga Kheti. Okay, so Korwa tribe has its own panchayat also, and justice is administered to lawbreakers in a group meeting in accordance with societal conventions. So they have a religious practice which is restricted to ancestral worship and to the worship of a handful of gods and deities. So what is PM Janman scheme? It aims to improve the socio-economic status of PBTGs by bridging gaps in health, education, and livelihood. And PM Janman scheme focuses on 11 critical interventions for PBTGs, such as permanent housing, giving them road connectivity, piped water supply, mobile medical units, hostel construction, Anganwadi facilities, and even skill development centers. Okay. So the next topic is presbyopia. This topic is important for your social issues and your science and tech section also. So recently, Mumbai-based Antod Pharmaceutical Company has announced that DCGI has approved a new eye drop called Presvu, which has been developed to reduce dependency on reading glasses for individuals affected by presbyopia. So presbyopia is basically an age-related condition in which the eyes gradually lose the ability to focus on nearby objects. So people usually start to develop presbyopia at around the age of 40, and according to doctors, spectacles are one of the most effective ways to manage this condition. But how does this Presvu work, or how would it help? So there is an active ingredient or the chemical compound called pilocarpine, and this compound would contract the iris muscles, and which controls the size of the pupil, and it would help the humans to see things clearly. Okay, thereby enabling your eyes to focus better on nearby objects. So Presvu would use dynamic buffer technology, which will be a base solution to adapt to the pH level of your tears, and this would ensure that eye drop will be very safe for extended use also, because such eye drops will be used for years at a stretch. This will be a prescription only medicine, and its impact is unlikely to last beyond 4 to 6 hours. So this should not be used by people who have inflammation of the iris. So regular use of Presvu may lead to itching and redness of eyes, eyebrow pain, and muscle spasms of the eye also, because it is going to contract your iris muscles. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.